Hi everyone, good evening. Do we have people over here? Okay, those who are already there, kindly drop a comment on chat box. Hi all, good evening. So welcome to the first live session of Ledroit India. I'm so excited for this. And before starting with the session, I would like to request you to just wait for 2 more minutes. Then we will be starting with the session. Okay? So just wait for 2 more minutes and then we will start. Okay, in the meanwhile, okay, Sashmi, thank you. I'll be using both the languages, Hindi and English. I hope किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिएगा व्हाट यू वांट मी टू यूज, वेदर यू वांट मी टू यूज इंग्लिश और हिंदी. वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, सो मीन वाइल प्लीज लेट मी नो आप कौन से कॉलेज में हो, वेदर यू आर अ लीगल प्रोफेशनल राइट नाउ, व्हाट यू आर डूइंग करेंटली, in which year you are in currently. Please let me know in the chat box. That way I'll get an idea like at what level I have to explain you the things. Okay, Apurva, you just finished your final year exams. Kapil is awaiting for his results. Vidhi is saying that she's currently in second year of BLLB. Okay. Who do we have next? Like, please let me know आप क्या कर रहे हो अभी, आप practicing कर रहे हो. Okay. All right, so let's start with the session. Once again, very good evening and welcome to the first live session of Ledroit India. And today we are going to discuss on the topic of IT contracts. Okay, now we have started this series where we are going to understand about major agreements used in different type of industries. Every Friday we are going to go live at 6 p.m. We'll be sharing the links with you, but it's better if you can, subscribe to our channel to stay updated about the sessions. And in this throughout the session at 6 p.m. every Friday we are going to pick up every industry and we'll let you know हर इंडस्ट्री में कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का पर्पस क्या होता है एंड क्या कैसे वो हेल्पफुल रहते हैं. ओके, सो आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स यूज्ड इन आईटी सेक्टर. नाउ बिफोर आई गो विथ द कॉन्ट्रैक्ट्स यूज्ड इन आईटी सेक्टर, हम लोग पहले जानेंगे कि आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट कैसे होते हैं और हमें एज ए लॉयर क्यों जानना चाहिए कि आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स का पर्पस क्या है. जमाना बदल रहा है, आईटी अग्रीमेंट्स आर वेरी मच इन ट्रेंड.
एक टाइम था जहाँ लोगों को कंप्यूटर से डर लगता था, आज हमारे पास रोबोट्स है. सो यू कैन सी द इवॉल्वमेंट, देयर हैज बीन सो मच चेंज. हम लोग चेंज हो रहे हैं विद टाइम. सो एज अ लॉयर एज वेल आपको भी चेंज होना चाहिए, आपको भी अपनी स्किल्स कंटिन्यूसली अपग्रेडेड रखनी चाहिए ताकि आप टाइम के साथ मूव ऑन कर सको. अब पहले के ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली परचेज एंड सेल अग्रीमेंट्स होते थे, गुड्स एक्सचेंज होते थे और सेल होते थे, राइट? बट अभी हमारे पास देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर वेबसाइट्स, देर आर एप्लीकेशंस, देर इज AI, देर आर रोबोटिक्स, सो मेनी थिंग्स आर देर. सो देर बिजनेस अगर एक्सपैंड कर रहा है तो लॉयर्स की रिक्वायरमेंट भी एक्सपैंड कर रही है. इसलिए आईटी अग्रीमेंट्स एक ऑल टुगेदर सेपरेट इंडस्ट्री बन गई है जहाँ पे स्पेसिफिक लॉयर्स होते हैं जिन्हें आईटी की नॉलेज होती है, जिन्हें पता होता है कि आईटी इंडस्ट्री में कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होंगे. सो एज अ लॉयर्स हमें भी पता होना चाहिए. एंड यू नो, मोस्टली all the lawyers think कि contract drafting is just limited to drafting service agreement, NDA, master service agreement and all, but it uses okay, so it uses a lot of things. Vidyashri, actually, I'm going to explain in both the languages, English and Hindi. In case you guys have any difficulty in understanding, let me know to re-explain you that point. I can re-explain it to you in your preferred language. Okay. So, अब IT industry में there's a huge demand of lawyers जिन्हें knowledge है IT contracts की. Like basic contracts की knowledge is with everyone. But why there's a demand for specific lawyers who have knowledge of IT agreements is that not everyone is aware of IT agreements. Not everyone is aware of IT terminologies. Mostly people who have been hired for IT lawyers are the people who have interest, like who have done BTech before, जिन्होंने पहले BTech किया है, BCA किया है, and then they went for law. So उन्हें तो comparatively a person जिसने BLLB या BCom LLB किया है, comparatively BTech LLB वाले इंसान को ज़्यादा नॉलेज होगी, right? Am I right or wrong? करेक्ट, बिकॉज बीटेक वाले इंसान को टर्मिनोलॉजीज ज्यादा पता होगी, आईटी इंडस्ट्री के बारे ज्यादा पता होगा, सो दे विल बी एबल टू ड्राफ्ट दीज टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स. नाउ एज अ लॉयर हु हैज डन BLLB or BCom LLB or normal LLB, what are you expected? You are expected to have at least basic understanding of IT terminologies, so you can, you know, draft these type of agreements as well. You can draft IT agreements. So let me just know once my screen is visible to you so that we can finally start with the session. People who are joining the session right now, make sure that you subscribe to the channel because we are going to go live every Friday at 6 p.m. and every Friday we'll be having a new topic of discussion. Okay. And also let me know like you are currently in which year and what you're doing currently. So let me just know once the screen is visible to you all. Okay. Is my screen visible to you all? Can I have your reaction on the same? कि आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, मैंने शेयर किया हुआ है पीपीटी, आपको पीपीटी विजिबल है स्क्रीन पे? Okay, great. Thank you. So now let's understand with the basics like how IT contracts are different from your general contracts. So we discussed कि पहले जो contracts होते थे, they were mainly focused on your purchase and sale, goods transaction होता था. But with the change of time, now we are doing a lot of different type of businesses. Now we have e-commerce. Now we are doing businesses online. So there are a lot of change. पब्लिक चेंज हो गई, हमारी हमारे यूसेज चेंज हो गए, हम लोग का पहनावा भी चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया. सो विद टाइम वी हैव आल्सो चेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल. व्हेन कमिंग ऑन टू योर आईटी इंडस्ट्री, आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स मेजरली डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर. नाउ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी मेजरली फोकस्ड ऑन योर परचेज एंड सेल, राइट, बेसिक ट्रांजैक्शन, इसलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं. बट आईटी अग्रीमेंट्स में देर आर अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज, देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स जिसमें डिफरेंट तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हर लेवल पे चाहिए होते हैं. आपको हर लेवल पे एक न्यू तरीके का आईटी अग्रीमेंट चाहिए होता है टू मीट द नीड्स ऑफ योर क्लाइंट. सो सब्जेक्ट मैटर टोटली अलग हो गया. नाउ जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर, normal sale and purchase. IT is your what, information technology agreements. Okay, so all together ये IT, that is software related contracts पे focus कर रहा है. इसमें हम लोग सिर्फ purchase and sale की बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग services के बारे में बात करेंगे, right? So subject matter different हो गया. Complexity and technical language.
आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आईटी एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स. रीजन इज कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी जो लैंग्वेज होती है इट्स वेरी मच कॉमन इन नेचर, इट्स वेरी मच much more related to purchase sale or basic roles and responsibilities of the parties. What are their requirements, how they are going to make payment to each other, all these things are covered in your general agreement. वहीं अगर हम बात आईटी अग्रीमेंट्स की करेंगे, आईटी अग्रीमेंट्स में आप परचेज एंड सेल करोगे, आप सेम चीजें जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स पे करते आए हो अब वो करोगे, पेमेंट्स के बारे भी आप बात करोगे, पर एडिशनल आप सॉफ्टवेयर्स के बारे भी बात करोगे. देयर विल बी एडिशनल सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी सच एज सोर्स कोड, एस्क्रो. सो ये सब वर्ड्स यूज होंगे जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट दीज टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स, राइट. सो अगर आपको जावा के बारे पता ही नहीं है एंड अगर हम लोग आपको बोल रहे हैं कि एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट करो फॉर प्रोवाइडिंग जावा सर्विसेज और आपको पता ही नहीं उस चीज के बारे, हाउ यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो आपको टेक्निकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए, एस्क्रो क्या होता है पता होना चाहिए, सोर्स कोड क्या होता है पता होना चाहिए. लेट्स गो विथ वेरी बेसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इसका मीनिंग तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सको, राइट. Intellectual property focus. So general contracts में where our responsibilities mostly related to your doing transaction, buying and selling goods. जहाँ नॉर्मल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम गुड्स परचेज सेल करें, वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूसेज नहीं होता है. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज मीन्स जो भी प्रॉपर्टी, जो भी चीज आप अपने इनोवेशन, अपने आइडिया से क्रिएट कर रहे हो, अपने इंटेलेक्ट को यूज करके आप क्रिएट कर रहे हो, दैट इज नोन एज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, सो इन योर आईटी इंडस्ट्री कहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है? व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग कोड्स, आप कोड्स बनाते हो, यू आर यूजिंग योर माइंड वाइल ड्राफ्टिंग कोड्स, राइट. आप कोई डिजाइन बना रहे हो, सॉफ्टवेयर का डिजाइन, तो वहां पे भी आपने अपना माइंड यूज किया कि कौन सा कलर जाएगा, ये डिजाइन कैसे अच्छा लगेगा एंड ऑल थिंग्स, राइट. सो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहाँ पे आपने अपनी मेहनत से अपना माइंड अप्लाई करके कुछ न्यू चीज क्रिएट की है. Okay, so mainly your intellectual property goes with trademark, copyright, patent, designs, geographical indication and trade secrets. ये 5 तरह के intellectual properties होते हैं. अब IT agreements में intellectual property पे आपका ज़्यादा focus होता है, जो आपके नॉर्मल अग्रीमेंट्स पे फोकस नहीं होता है. इफ आई एम गोइंग टू फास्ट प्लीज लेट मी नो, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग देन ऑल्सो प्लीज लेट मी नो सो आई कैन री एक्सप्लेन थिंग्स टू यू. ओके. Okay. So I can see that people are debating over English and Hindi, and I'm trying my best to explain things to you in both the languages. So all like overall the audience is understanding. So okay, please try to cooperate. I'll be explaining both the things in English and Hindi. Okay. Now next is like licensing and access rights. Now why we are talking about your licensing and access rights? The reason is that we are using certain softwares. So in softwares आपको license use करना पड़ता है. There is an exchange of license. Can anyone tell me what is license? What do you understand by the term license? What is license over here? Please let me know your answers in the chat box. What is license? Take a minute. Let me know. Basic language में license का मतलब क्या होता है बताइए मुझे. Okay. So basically license is your type of giving permission. आप किसी को permission दे रहे हो अपना product use करने के लिए. So that is what your licensing is. So इसमें software agreements में we are going to talk about licensing कि software को usage करने के लिए how we are giving permission. हम लोग अपने software को use करने के लिए permission कैसे दे रहे हैं, license कैसे दे रहे हैं. So again जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये फोकस नहीं रहता है, बट आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स में वी हैव लाइसेंसिंग एज अ फोकस्ड क्लॉज एज वेल. देन वी हैव डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. दिस इज अ वेरी मेजर चेंज इन इंडस्ट्री. Before 2000, I don't think so data protection was even a word. People didn't used to focus on data protection, right? So, but after 2000, there has been increase in IT industry. There has been increase in softwares, increase in web applications and all these things. Facebook and all सब बाद में आया. जब Facebook आया, there हजारों लोगों ने एक साथ अपना अकाउंट क्रिएट किया फेसबुक पे. जैसे राइट नाउ वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, राइट नाउ वी आर यूजिंग यूट्यूब एज वेल, राइट.
सो अकाउंट क्रिएट करने में हमने अपनी डिटेल्स डाली उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, हमने अपने ईमेल आईडी डाले, अपने नेम डाला, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस in order to have access to those applications. Now because of this what started happening, अगर कोई लॉ ही नहीं था पहले डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड, हम जो अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं एप्लीकेशन में, दैट इज आवर डेटा, that is our information that we are sharing with the platform. Okay, so our information is the data for these type of platforms, Facebook, Instagram, WhatsApp, all these have data, like all these have information to our personal details, email IDs and all these things. अगर ये डेटा लीक हो जाए, अगर ये डेटा किसी और के हाथ चल जाए, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ रिस्क. लाइक यू ऑफन रिसीव फिशिंग मेल्स, आपको जो मेल पे आ जाते हैं फिशिंग मेल्स, एंड उस चक्कर में या फिर स्पैम मैसेजेस जो आ जाते हैं कि सर्टेन अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट और इस लिंक पे क्लिक करिए एंड जाइए. सो दैट्स वाई डेटा प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. दैट इज नोन एज योर डेटा प्रोटेक्शन, कि जो डेटा आप डाल रहे हो वेबसाइट पे, हाउ इट विल बी प्रोटेक्टेड, हाउ इट विल बी सिक्योर्ड. So those things are also focused while drafting your IT agreements. Okay, next we have is your change management and updates. अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका ऑल टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता था, आपने मुझसे कुछ खरीदा, मैंने आपको कुछ सामान बेचा, खत्म, एंड, राइट. सो बेसिकली यहीं तक होता था ट्रांजैक्शन, परचेज एंड सेल. Like I gave the object to you for which you paid consideration, and that's all. The contract is over. We both successfully completed our contractual obligation. But IT agreements are more of your ongoing agreements. ये contracts आपके एक बार में खत्म नहीं हो जाते, ये ongoing चलते रहते हैं, क्योंकि आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो, वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट. आपको कंटिन्यूसली उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं. दैट्स वाई इन चीजों का भी ख्याल रखा जाता है while drafting an IT agreement, so that you can meet up with the dynamics, you can continuously update the software. Are we clear? What's the difference between your IT agreement and your general contracts? Okay. All right. So now our major focus now will be, like, in this session we are going to discuss about different type of IT agreements today. We are going to discuss what's the usage of each agreement. So for now I'm just giving you basic understanding of these type of, like, how your IT contracts are different from your general contracts. ठीक है, हम लोग explain करेंगे कि different तरीके के agreements किस purpose के लिए use होते हैं. अब आप IT contracts से कितने पैसे कमा सकते हो? Like, we all love money, right? We all love money. We all want to earn money. That's our major focus. And even if you're learning a skill, your major focus is to earn money. So as a lawyer who has got understanding of your IT agreements, as a lawyer who is a, fresh entry level freelancer, you can expect around $25 to $50 per hour. I'll be coming on to this, how you can earn. Now, एज ए लॉयर आप दो चीजें कर सकते हो आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानने के बाद. फर्स्ट इज, आप एज एन इन हाउस काउंसिल कंपनीज पे जॉब कर सकते हो. Which type of companies? Mainly IT companies and startups. So your Infosys, Wipro, TCS, all these companies are looking out for IT lawyers who have knowledge of IT agreements, जिन्हें IT terminologies पता है, जो समझ पाएंगे कि हमारा बिजनेस वर्क कैसे करता है. So अगर किसी को बिजनेस वर्क कैसे करता है पता नहीं होगा, तो कंपनी हायर कैसे करेगी, राइट. सो दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग आउट फॉर पीपल जिन्हें पता है आईटी इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, इनमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, ताकि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट कर सकें. So this is one place where you can look out for job opportunity. They are looking out for lawyers and there's huge demand for IT lawyers because हर किसी को नहीं पता होता है. Okay, the second way of earning through IT agreements is, दूसरा तरीका IT agreement से कमाने का है freelancing. Freelancing के लिए you can create your account on Upwork, Freelance and different other freelancing platforms. You can create your account over here. आप इन applications पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करिए एज अ फ्रीलांसर टू ड्राफ्ट. नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करने के लिए यू एक्चुअली डोंट नीड अ बार लाइसेंस. आपको बार लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट्स. दैट मीन्स इफ यू लर्न ड्राफ्टिंग यू कैन स्टार्ट अर्निंग इन योर कॉलेज टाइम एज वेल. आप कॉलेज में रहते रहते आप ड्राफ्टिंग के थ्रू पैसे कमाना चालू कर सकते हो. अब
how you will be able to develop your skills, why you should be knowing like how to draft these contracts. The earlier you start, जितनी पहले आप start करोगे उतने better आप contracts draft कर पाओगे, उतना better आप practice कर पाओगे, ताकि by the time you are out of your law college आपके पास तो experience है contract draft करने का, right? आपके पास proper experience है, now you don't have that trial and error thing to do. आप डायरेक्टली कॉलेज के बाद जॉब एप्लीकेशंस पे डाल सकते हो कि आपके पास एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करने का, आप एज अ फ्रीलांसर ड्राफ्ट करते थे कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड नाउ like you're looking out for an opportunity, or you can even start your own business, right? Where you are providing contract drafting services. So the earlier you start, the better it is for you. Now, as a freelancer, like a fresher freelancer, you can expect 25 to $50 per hour. You'll actually notice कि Upwork and freelance.coms पे जाकर लोग पर आईटी अग्रीमेंट पर आर के लिए या तो वो चार्ज कर रहे हैं, और दे आर चार्जिंग पर अग्रीमेंट. अगर आप एक्सपीरियंस है 5+ years का और 5 years का in drafting contracts, you can charge them up to $75 per hour, or you can charge them a fixed amount of $1,500 per hour. Now you can do the conversion in INR कि कितना आपको, you can expect how much amount you can expect per IT contract. Just give me a minute. And these are very, very lengthy agreements. Okay. So these are very, very lengthy agreements that you have to draft, and you can expect that much. Like if I have to tell it to you in INR, usually if you're starting as a fresher, you can charge up from 25,000 per IT agreement, and if you have got certain experience, you can charge around 80,000 to 1 lakh per IT agreement. Okay, so that's the demand of IT lawyers, because हर किसी के पास वो skill ही नहीं है. So आपको automatically डिमांड आपकी बढ़ी हुई है, बिकॉज मार्केट में सप्लाई नहीं है. बेसिक इकोनॉमिक्स, मार्केट में सप्लाई नहीं है, आईटी लॉयर्स की डिमांड है, सो यू कैन चार्ज अप टिल दैट मच अमाउंट per agreement, I'm saying. And usually IT agreements pages can go up till your 500, 600. So these are very lengthy agreements. That's for a reason, because you have to keep things in mind while drafting these type of agreements. Are we going so far like good? You guys are able to understand everything कि वापस से मैं कुछ explain करूं? Okay, I just give me a minute, I'll go through your chats, then we'll move on with different type of contracts. Okay. All right. So now let's start with your contracts used in IT industry. So हर इंडस्ट्री में एक मेजर फोकस एरिया होता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके डे टू डे बिजनेस में यूज होते हैं. क्या मुझे बता सकते हो आप लोग कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? लेट मी नो, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट इन योर बेसिक लैंग्वेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? No one? There are so many people over here. Please let me know. Contract क्या होता है? What do you understand by contract? Okay. So agreement, contract agreement होता है. Okay. Agreement enforceable by law is a contract. A legally binding agreement. Correct. All agreements enforceable by law is a contract, right? So IT contracts जो होते हैं, they also fall into your category of your general contracts, like definition of contracts that has been defined under your Indian Contract Act, right? Now, what are the different type of agreements that you will be using on your day to day basis in an IT industry? Basic categories of contracts होते हैं. Mainly you go with service agreement, right? Service agreement, purchase agreement, NDA. ये सारे आपके basic agreements होते हैं जो हर business में use होते हैं. हर business में इनका usage होता है. बट आईटी इंडस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम दीज अग्रीमेंट्स, ये अग्रीमेंट्स तो यूज होंगे बिकॉज ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में यूज होते हैं. देर आर सम एडिशनल अग्रीमेंट्स जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए.
there are additional agreements that you should be knowing about. Now, what are these agreements? So there are certain list of agreements. Right now, you can see it on the screen that I have provided a certain list of different agreements that are used in IT industry. Now we'll be going one by one. Are you all with me? Can I have your thumbs up or any reaction so I know that you guys are there with me and understanding things? Come on, give me some reaction so I know you guys are up till here. You guys are understanding things. Great. Okay. Now let's start with the very first agreement, that is your non-disclosure agreement. Now, what is non-disclosure agreement? Non-disclosure agreement is also known as your confidentiality agreement. इसे confidentiality agreement भी बोलते हैं. अब ये अग्रीमेंट हर बिजनेस में यूज होता है, just सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में नहीं. This agreement is used in all types of businesses. What's the usage of this agreement is to maintain confidentiality. Let's go with an example. हम एक example से जानेंगे कि एक सॉफ्ट लेट्स गो, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है कि मुझे एक सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. आई हैव एन आइडिया दैट आई वांट टू प्रोवाइड सर्टेन टाइप ऑफ सर्विसेज, एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट सर्विस आई नीड अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, मुझे जो आइडिया है, जो सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करनी है, उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए. अब ये सॉफ्टवेयर आएगा कैसे? क्योंकि आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर. आई डोंट हैव दैट नॉलेज. देयर इज आई हैव टू शेयर माय आइडिया विद अ पर्सन, right? I have to share my idea with a person who has expertise in developing a software, creating a software, right? मुझे मेरा आइडिया शेयर करना होगा किसी इंसान के साथ जिसे नॉलेज है कि सॉफ्टवेयर क्रिएट कैसे किया जा सकता है. सो अगर मैं अपना आइडिया, जो अभी कुछ रजिस्टर्ड नहीं, इट्स जस्ट एन आइडिया, अगर मैं अपना आइडिया किसी और इंसान के साथ शेयर करने वाली हूँ, देर आर चांसेस कि वो इंसान मेरा आइडिया स्टील कर ले और अपना आइडिया बोल के क्लेम कर ले, रजिस्टर कर ले, राइट? बिकॉज उस इंसान के पास तो नॉलेज है, ही हैज द नॉलेज ऑफ हाउ टू create a software, he has that knowledge. So there are chances that he will steal my idea and automatically he'll claim my idea as his own, because उसके पास तो सॉफ्टवेयर भी है, मेरे पास तो सिर्फ एक आइडिया था, राइट? एंड आइडियाज आर नॉट रजिस्ट्रेबल. आप आइडिया को रजिस्टर नहीं कर सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, बट आप once it is executed, once your idea is executed, जब कुछ आपके पास है दिखाने के लिए, that time you'll be able to register your idea once it is showable, right? तब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्टर कर सकते हो. सो बिफोर दिस, अभी तो मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया. इफ आई हैव टू शेयर माय इंफॉर्मेशन विद द अदर पार्टी, देयर आर चांसेस दैट ही इज गोइंग टू स्टील माय आइडिया, ही इज गोइंग टू क्लेम इट एज इट्स ओन. वो मेरा आइडिया चोरी करके अपना बोल दे. सो हाउ आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ? मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ? आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ एन एनडीए. एनडीए का मेजर पर्पस ही ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वो किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे जब तक मैंने आपको परमिशन नहीं दी है, या फिर जब तक कोई सिचुएशन नहीं आ जाए जहाँ आपको शेयर करना पड़ा उस इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, आई एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश एज वेल. The purpose of NDA is to maintain secrecy of the information that I have shared with you, that you are not supposed to share this information with anyone else till the time I have given you permission to share it with any other person, or to use that information, or to disclose it to any third party. Okay, so that's your major purpose of NDA. नाउ वी अंडरस्टूड कि आईटी इंडस्ट्री में एनडीए का क्या पर्पस होगा. बिकॉज अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, मुझे अपना आइडिया आपके साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है सॉफ्टवेयर क्रिएट करने की, तभी आप मेरी मदद कर पाओगे कि वो सॉफ्टवेयर क्रिएट कैसे होगा, राइट? सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई एम गोइंग टू एंटर इनटू एनडीए. सेम थिंग हैपेंस विद कंपनीज. कंपनीज भी यही करती है. दे एंटर इनटू the first agreement that every company is going to enter into will be your NDA. That's your first major agreement that they're going to enter into. It's a very important agreement. And as a lawyer, आपको ये basic agreement तो आना चाहिए कि NDA draft कैसे करते हैं. Okay, so इनफैक्ट लेड्रॉइड का कोर्स भी है एनडीए ड्राफ्टिंग का, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th जुलाई एंड दैट इज अवेलेबल एट जस्ट ₹300. आप वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो. लाइव कोर्स होगा जहाँ पे आपको एनडीए ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी. ओके, सो वी कवर्ड एनडीए. आर यू ऑल विथ मी? आपको अंडरस्टैंडिंग मिली एनडीए क्या होता है, यूजेज क्या होता है आईटी इंडस्ट्री में एनडीए का?
सबको समझ आ गया तो प्लीज गिव मी रिएक्शन सो आई नो दैट आपको समझ आ गया. Then we'll move on to our next type of agreement. Okay, so we'll do this for all type of agreements. After every agreement I'll be asking you to give me certain reactions so I know that you guys are understanding. अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर भी बताइएगा. I'll re-explain things to you. Okay, all right. Can I have more reactions on this? Please let me know. सबको NDA समझ आ गया? Perfect. Now, second category of the agreement is your software development agreement. So, आप नेम को ब्रेक करके समझ सकते हो इस अग्रीमेंट का पर्पस क्या है. सॉफ्टवेयर, हमें पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है. डेवलपमेंट मीन्स डेवलप करना, कुछ बनाना, क्रिएट करना. ओके, अग्रीमेंट, वी ऑल नो व्हाट दिस अग्रीमेंट. सो in this agreement the purpose is to develop the software. So in our example, जहाँ मैंने अपना आइडिया शेयर किया सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. सो फॉर दैट आई नीड अ सॉफ्टवेयर. आई वांट दीज टाइप ऑफ सर्विसेज. For the same reason I am approaching you to create a software for me, right? I am approaching him. तो वो इंसान मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देगा, वो डेवलप करेगा. अब इस अग्रीमेंट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि what are the type of features we want in our software. हमारा सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, वो कितने टाइम पे डेवलप हो जाएगा, ये सारी चीजें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अग्रीमेंट में एक्सप्लेन करेंगे. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द पार्टीज. वन विल बी योर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपर होगी, दूसरी पार्टी क्लाइंट होगी, जहाँ पे क्लाइंट एक्सप्लेन कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि मुझे ये सारी सर्विसेज चाहिए. Okay, so basically client is explaining what are his requirements, what type of features he want in his software, and accordingly the software developer is going to develop that software, create that software. Okay, so all these things will be covered in your software development agreement. Are we okay with it? Have we all got the understanding of what is software development agreement? Okay. Now, the next type of agreement which we have is your software licensing agreement. Again, licensing, we understood the word, like we discussed. Licensing का मतलब क्या होता है? Licensing का मतलब होता है to give permission, to give authority. अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है. दिस अग्रीमेंट प्लेस अ वाइटल रोल इन योर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिकॉज सॉफ्टवेयर वर्क ऑन लाइसेंस. Every now and then you will be needing license, and you all in fact are using software. You all have signed software license agreement. You know, the first step you do once you get a new laptop, once you get a new computer, जब आप पहला कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हो, आप पहला काम सॉफ्टवेयर लाइसेंस अग्रीमेंट साइन करते हो. कैसे? जब आप MS वर्ड लेते हो, you have to sign it, right? You click on that I accept button. आप I accept button पे क्लिक करते हो. That is your way of signing the contract. आप MS वर्ड का लाइसेंस खरीदते हो ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सको. सो दैट इज योर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर परमिशन ले रहे हो कि आपके पास परमिशन है टू यूज दैट सॉफ्टवेयर. आर वी क्लियर विद इट कि व्हाट इज द यूसेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस अग्रीमेंट? आप सबको समझ आया? प्लीज गिव मी रिएक्शन सो वी कैन मूव अहेड. Okay. Now, the next category is your maintenance and support agreement. Now, अब सॉफ्टवेयर डेवलप करना बस वहां तक लिमिट नहीं है. आपने मुझसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट मांगी, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए था, मैंने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया. इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू दैट. आई ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड यू सपोर्ट सर्विसेज, राइट? क्योंकि सॉफ्टवेयर क्रिएट करने तक लिमिटेड नहीं रहता है, सॉफ्टवेयर को आगे भी डेवलप करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि उसमें अटैक हो जाए, साइबर अटैक हो जाए, या फिर आपका सॉफ्टवेयर फंक्शन नहीं कर रहा है. सो इनफैक्ट आपके फोन्स का सॉफ्टवेयर भी चेंज होता है. आप देखते हो एवरी नाउ एंड देन एंड्रॉइड पे, आईफोन पे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, right? We all received certain update message ki kindly update your phone and all. So what is that? दैट इज योर रेगुलर मेंटेनेंस. आप अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म यूज करते हो या कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, आप वहां पे देखोगे दैट यू सी अ मैसेज दैट वेबसाइट इज करेंटली अंडर मेंटेनेंस. आपको ये मैसेज दिखेगा वेबसाइट इज करेंटली अंडर मेंटेनेंस, और यू कम अक्रॉस 404 error, right? So these type, what are these things? These things basically means that software or that website is currently under progress, under maintenance. So
इट्स जस्ट लाइक योर मशीन, जो विजिबल है आपको, आप टच नहीं कर पा रहे हो पर मशीन है। अब कोई भी मशीन होती है उसे रेस्ट देना पड़ता है, उसे ऑयलिंग करनी पड़ती है कंटिन्यूअसली, राइट? सो मेंटेनेंस विल बी योर दैट ऑयलिंग, कि आपको मशीन को ऑयल करना पड़ रहा है। सेम गोज विथ योर सॉफ्टवेयर, कि आपको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है ताकि आपका सॉफ्टवेयर फंक्शनल रहे, अच्छे से वर्क करे। सपोर्ट, आपको सपोर्ट चाहिए होगी, जिसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया दैट पर्सन कैन सपोर्ट यू विथ रेगुलर मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। अगर कुछ ग्लिच आ जाए सॉफ्टवेयर पे तो दैट पर्सन कैन हेल्प यू विथ इट। सो ऑल टुगेदर एक अलग अग्रीमेंट बनता है फॉर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट अग्रीमेंट। ओके, नाउ देयर आर चांसेस कि मैंने आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप कराया, आपने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया मेरे लिए, बट आई डेंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द सर्विस, मुझे आपके साथ आगे सर्विस नहीं करनी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरा सॉफ्टवेयर आगे मेंटेन करो या सपोर्ट करो, बिकॉज एक बार आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है, अब टाटा बाय बाय, मुझे और सर्विस आपसे नहीं चाहिए। तो आप ये सर्विस किसी और को दे सकते हो कि आई हैव गॉट दिस सॉफ्टवेयर, प्लीज नाउ मेंटेन, हेल्प मी विथ इट्स मेंटेनेंस। तो आप मान लीजिए आपने इन्फोसिस से सॉफ्टवेयर बनवाया, company, IT companies, Infosys, they do take these services, okay? They do develop softwares for big companies and industry. Infosys undertake these type of agreements. Once I have taken service for software development from Infosys, मैंने Infosys से software बनवाया, मुझे Infosys के साथ अब काम नहीं करना है, I can take my software to Wipro। मैं विप्रो पास चल जाऊंगी, बोलूंगी कि इन्फोसिस ने सॉफ्टवेयर बना दिया पर इसकी मेंटेनेंस तुम करके दो, अब कुछ भी होगा सॉफ्टवेयर पे, यू टेक कंट्रोल ऑफ इट, यू मैनेज इट। सो आई बी एंटरिंग इनटू मेंटेनेंस एंड सपोर्ट अग्रीमेंट विथ विप्रो। ओके, आप सभी को समझ आया व्हाट्स द यूसेज ऑफ मेंटेनेंस एंड सपोर्ट अग्रीमेंट? कैन आई हैव योर रिएक्शंस प्लीज, कि आप सबको समझ आया व्हाट्स द यूसेज ऑफ मेंटेनेंस एंड सपोर्ट अग्रीमेंट? Okay, great. Now, the next category of agreement we have is your cloud service agreement. Now, what's the purpose of cloud service? हम सभी ने word सुना होगा cloud storage, right? We all have heard of the term cloud storage. अब इस agreement का purpose is कि कंपनीज के जो डेटा होते हैं, जो हमारा डेटा है, यूट्यूब इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के पास अपनी क्लाउड स्टोरेज है, ओके? बट जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं, स्मॉल कंपनियां होती हैं, वो लोग आईटी कंपनीज जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो कहाँ पे अपना डेटा सेव करते हैं? उनके पास तो उतने पैसे ही नहीं है, दे डोंट हैव दैट मच capital with them to invest in altogether separate cloud storage, to create a separate cloud storage with them and save that data, because they are doing business at a very small level, उनके पास उतने पैसे ही नहीं है, they are mainly focused on running the business. So where they are going to store the data of the people, they are going to save it in the cloud storage. So cloud storage में आप क्या करते हो? Let's go with basic example. आपके पास Gmail है, हम सबके पास Gmail अकाउंट है, राइट? है या नहीं? हमारे सबके पास जीमेल अकाउंट है। जीमेल में जब आपके ड्राइव में जब ना स्टोरेज, आपको बेसिक लिमिट हर किसी को मिली हुई है, वी ऑल हैव गॉट अ बेसिक लिमिट। वंस दैट स्टोरेज इज फुल, वी हैव टू परचेज क्लाउड स्टोरेज फ्रॉम गूगल, वी हैव टू परचेज इट। सो दैट इज वेयर कि मैंने एडिशनल स्टोरेज खरीदी है गूगल से, मैंने एडिशनल काइंड ऑफ लॉकर खरीदा है गूगल से, जहां मैं अपना डेटा सेव कर रही हूँ। सो सेम गोज विथ योर बिजनेस। अगर मैंने कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू स्टोर द डेटा, where I'm going to store it, I'm going to purchase, I'm going to enter into a separate agreement for cloud service agreement known as, where I'm going to you know get a storage. So let's go with example, Google के पास master computers है, it has got big infrastructure. So companies, what they do, they basically purchase storage in Google and वहां पे अपना kind of एक blockage बना लेते हैं उनके क्लाउड स्टोरेज में, एंड वहां पे उस कंपनी का डेटा स्टोर होता है। सो दैट इज योर क्लाउड सर्विस अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट का यूज वहां होता है जहां पे आप एक्सप्लेन करते हो कि मैं अपना data store करूंगी, आई एम परचेजिंग क्लाउड स्टोरेज फ्रॉम यू, सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू सेव माय डेटा। ओके, हैव यू ऑल गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज क्लाउड सर्विस अग्रीमेंट? एवरीवन प्लीज लेट मी नो कि आप सभी को समझ आया क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड सर्विस अग्रीमेंट क्या होता है? Great. Okay. Next we have is your
आईटी आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट, अब ये क्या होता है? आईटी आउटसोर्सिंग, लेट्स गो विद एन एग्जांपल कि अभी मैंने जो शेयर किया कि स्टोरेज के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो व्हाट आई डिड, मैंने किसी और से सर्विस ली, स्टोरेज कहीं और बनाई। तो कंपनीज भी क्या करती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके पास सारी चीजें नहीं होती। हम लोग बेसिक एग्जांपल से लेंगे कि लॉयर, हर कंपनी, छोटी कंपनी लॉयर की टीम हायर नहीं कर सकती है, राइट? उनके पास उतने पैसे नहीं होते, क्योंकि अगर मेरा मेन पर्पस है गुड सेल करना, मैं ज्यादा पैसे गुड सेल करने में लगाऊंगी कि मेरी सेल बढ़े। मैं पैसे नहीं लगाऊंगी कि मेरे पास एक अलग लॉयर की टीम हो, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी। सो सेम गोज विथ कंपनी। कंपनियां क्या करेंगी, अगर मेरी प्रायोरिटी नहीं है उसमें करने की, तो मैं किसी और को ये काम दूंगी, किसी थर्ड पार्टी को मैं अपना काम दूंगी कि अगर मेरे ऊपर कुछ केस फाइल होता है या कुछ होता है, तो मैं उस लॉ फर्म को अथॉरिटी दे रही हूँ कि दे कैन टेक एक्शन ऑन दैट केस ऑन बिहाफ ऑफ मी, दे कैन टेक इट फर्दर. So this is known as your outsourcing, where I don't have enough budget with me to create a altogether separate department. So I'm going to outsource this. मैं अपनी कंपनी से बाहर निकाल कर सोर्स यूज करूंगी. That's why it is known as your outsource. Means finding a source outside your business. Okay, that's the meaning of your outsourcing. So in this as well, what we are doing, IT outsourcing, basically I am taking certain services from a third party. मैं किसी third party से IT services ले रही हूँ. That is known as your IT outsourcing agreement. ओके, दैट्स द मेन रीजन कि मैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उनसे आईटी सर्विसेज लूंगी. फॉर दैट रीजन आई हैव एंटर्ड इनटू योर आईटी आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट. क्लियर? हैव यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट? ओके, नाउ लेट्स गो विथ योर SaaS अग्रीमेंट. ये अग्रीमेंट को SaaS अग्रीमेंट नहीं बोलते. Some people go with SaaS agreement. इसे SaaS नहीं बोलते, इसे SaaS agreement बोलते हैं. That is your software as a service agreement. ओके, इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अग्रीमेंट. अब ये अग्रीमेंट भी आप डे टू डे लाइफ में साइन करते हो. आप सभी ने यूज किया है इस अग्रीमेंट को, और आपको पता भी नहीं होगा दैट यू हैव साइंड अ SaaS अग्रीमेंट. नाउ क्या यूजेज होती है? हम सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं, वी आर टेकिंग सर्टेन सर्विस फ्रॉम इट. लाइक राइट नाउ वी आर व्यूइंग दिस पीपीटी ऑन कैनवा. हम ये पीपीटी कैनवा में देख रहे हैं. हम कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं, हम उससे सर्विस लेते हैं, राइट? इसलिए आप देखोगे कई प्लेटफॉर्म्स में दे आर चार्जिंग यू. लेट्स गो विथ योर नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स क्या करता है, आपको स्ट्रीमलाइन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, राइट? आपको नेटफ्लिक्स के सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है उसका. सो दैट इज बेसिकली योर SaaS अग्रीमेंट, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जहाँ मेन पर्पस सॉफ्टवेयर का है टू प्रोवाइड यू सर्विसेज. Okay, that's the major purpose of your SaaS agreement. Same goes with your end user license agreement. Now, end user license, focus on the word end user. It means the final user, last user. So over here, जब आप कुछ लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हो, तो उसमें भी ना आपको डायरेक्टली फर्स्ट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट क्लिक करना पड़ता है. दैट इज कि जो लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप अकॉर्डिंगली फॉलो करोगे. Let's go with basic example. When we used to install a game application, याद है पहले CD आते थे गेम्स के, जिसे डाल के हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर पे गेम्स इंस्टॉल करते थे. एंड जब वो गेम्स इंस्टॉल करते थे ना, तो हमें एक्सेप्ट पे क्लिक करना पड़ता था, तब वो गेम इंस्टॉल होती थी, राइट? हम सभी ने किया है. व्हेनेवर, इवन व्हेन वी डाउनलोड एन एप्लीकेशन, वी हैव टू क्लिक आई अग्री, देन वो एप्लीकेशन फर्दर इंस्टॉल होती है. सो दैट इज योर एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट, दैट यू आर गिविंग परमिशन, like you're accepting the terms and conditions, how to use that software. मोर लाइक जब कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट यूज कैसे करते हैं, वो सब चीजें उसमें एक्सप्लेन की रहती है उस अग्रीमेंट में. सो सेम गोज विथ योर सॉफ्टवेयर. हमने सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, किस लिमिट्स में यूज करना है, ये सारी चीजें आपके एंड यूजर लाइसेंस अग्रीमेंट पे एक्सप्लेन होंगी. आर वी क्लियर? आप सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक कि क्या पर्पस है? Please let me know jaldi because I need to cover 4 more contracts over here. Please let me know. आप सभी को समझ आ रहा है कि what is end user license agreement. Any confusion so far? कुछ भी आपको डाउट है अभी तक? Okay,
Great. Just a reminder once again, please subscribe to the channel because every Friday at 6 p.m. हम लोग और discussions ऐसे करेंगे और practical insight share करेंगे. Okay, so make sure that you are subscribing to the channel to stay updated. Also, आप हमारा WhatsApp group भी join कर सकते हो जो chat description पे होगा. उसके through you'll be staying updated about regular updates की रेगुलर फ्री वर्कशॉप्स होती है हमारी, वेबिनार्स होते हैं, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. नाउ लेट्स गो विथ योर नेक्स्ट टाइप ऑफ अग्रीमेंट, दैट इज योर वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट अग्रीमेंट. ये बेसिक अग्रीमेंट है. आई एम श्योर आप सभी को अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि इसका यूसेज क्या है. वेबसाइट और ऐप. सो व्हेनेवर I want to create a website or application, I'll be entering into an agreement with that software developer, right? So that is your how to develop an app, how to develop a website. That is your website or application agreement. That's the major purpose of it. Next, move on to your IT infrastructure and system integration agreement. This is more of a complex agreement. अब इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जब हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू कि आपको दिख रहा है, इट्स विजिबल टू यू, इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू इट. आपको फिजिकली मशीन्स क्रिएट करनी पड़ती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को दिखाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी अभी फोन से या लैपटॉप से इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, राइट? आप एक मशीन के थ्रू अटेंड कर रहे हो. सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, इट्स विजिबल टू यू, बट एक्चुअली आप मशीन के थ्रू ज्वाइन किए हो. ओके, सो सेम गोज विथ योर कंपनीज. उन्होंने भी सेम सॉफ्टवेयर तो बनाया है, पर उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, कंटिन्यूसली डेटा आपका स्टोर करने के लिए, दे हैव टू क्रिएट अ सेपरेट सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज नोन एज योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, जिसका मेजर पर्पस होता है टू हेल्प विद द सॉफ्टवेयर रनिंग, टू हेल्प विद द सॉफ्टवेयर कंटिन्यूएशन एंड डेवलपमेंट. That's the usage of your IT infrastructure. सिस्टम इंटीग्रेशन अगेन सेम मीनिंग है. सिस्टम इंटीग्रेट करना मतलब उस मशीन के अंदर सिस्टम को इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना, यूज कैसे करना, ये सब. तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, आपको क्लाउड स्टोरेज बनानी है तो वो मशीन कैसी बनेगी, आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी, राइट? सो वो सारी चीजें आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इंटीग्रेशन अग्रीमेंट पे एक्सप्लेन होंगी कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू नीड, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, what's the purpose of that infrastructure, what should be the design of that infrastructure, how much time it will take to develop that infrastructure, what are the things to keep in mind to run that infrastructure. So let's go. जो ये cloud storage या master computers होते हैं ना, इनको normal environment में नहीं रखा जाता है. इसलिए ऑफिसेस में भी आप देखोगे कि एसी लगे होते हैं, क्योंकि ये मशीन्स हीट हो जाएंगी, हीट होंगी तो खराब हो जाएंगी. सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कंसिडर करनी होती है. तो जब मास्टर कंप्यूटर्स होते हैं या क्लाउड स्टोरेजेस बनाई जाती है जो मशीन, उन्हें कैसे एनवायरनमेंट में स्टोर करना है, उनका ख्याल कैसे रखना है. उनको हम लोग गोपी बहू जैसे कपड़ा लेके क्लीन नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू प्रॉपरली टेक प्रॉपर मेजर्स टू मेक श्योर दैट इट इज गेटिंग प्रॉपरली क्लीन्ड एंड एवरीथिंग. सो ये सारी चीजें आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इंटीग्रेशन अग्रीमेंट में एक्सप्लेन होंगी. सभी को समझ आया? आर वी क्लियर विद इट? ओके, ग्रेट. अब हम लोग नेक्स्ट अग्रीमेंट में जाएंगे. नेक्स्ट इज योर एस्क्रो अग्रीमेंट. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आप सभी के लिए. ओके, अगर आपको नहीं समझ आए सो मुझे बताइएगा. नहीं समझ आया, आई विल री एक्सप्लेन. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी नो, आई विल री एक्सप्लेन इट टू यू इन इंग्लिश. ऑलराइट, escrow agreement is another agreement where there are three parties in this agreement. इस agreement में तीन parties होती है. एक दो agreement like दो parties we go with the regular client है, software developer है, ठीक है? client है, software developer है. third party जो होती है, third party is your escrow agent. इसमें थर्ड पार्टी जो होती है वो एस्क्रो एजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं? एस्क्रो एजेंट्स आर द पीपल जो काइंड ऑफ लेट्स गो विथ एग्जांपल ऑफ बंधक. बंधक में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पैसा लेते हैं और हम लोग कुछ रखते, मॉर्गेज पे रखते, राइट? वी काइंड ऑफ कीप समथिंग एज सिक्योरिटी. बट एस्क्रो एजेंट भी सेम काम करते हैं बट थोड़ा अलग होते हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं? मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, आप मुझे अभी पैसे दे रहे हो. ओके, आप मुझे अभी पैसे दे रहे हो, मैंने सॉफ्टवेयर क्रिएट भी किया, मैं सॉफ्टवेयर मेंटेन भी कर रही हूँ. आई एम डूइंग एवरीथिंग. आई हैव क्रिएटेड द सॉफ्टवेयर, आई एम मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर, आई एम डूइंग एवरीथिंग. बट
there's a code. सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट होते हैं? वी यूज कोड्स, राइट? कोडिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं, सो वी यूज अ कोड. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दिस कोड विथ यू. द रीजन इज, अगर मैंने आपके साथ कोड शेयर कर दिया, आप ये सॉफ्टवेयर उठाओगे, किसी और के पास चल जाओगे और उसे बोलोगे कि काम करके दो, तो इन दैट सिनेरियो आई एम लूजिंग अ क्लाइंट, मेरा क्लाइंट चल जाएगा. और लेट्स गो विथ अनदर एग्जांपल. व्हाट इफ मैंने आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मेरी कंपनी बंद हो गई. दैट सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने क्रिएट किया था आपका सॉफ्टवेयर, दैट कंपनी इज नो लॉन्गर देयर, वो कंपनी बंद हो गई. अब आप किसके पास जाओगे कि मेरा सॉफ्टवेयर संभालो, मेरा सॉफ्टवेयर का ख्याल रखो, मेंटेन करने में मुझे मदद करो? इसलिए एस्क्रो एजेंट्स होते हैं. जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, दे ऑलवेज एंटर इनटू एस्क्रो अग्रीमेंट, जहाँ पे वो थर्ड पार्टी एज एन एस्क्रो एजेंट लेके आते हैं. इसका काम ही यही होता है कि जो सॉफ्टवेयर बना है, जिस कोड के थ्रू बना है, सोर्स कोड बोलते हैं, जिस कोड के थ्रू बना है ये सॉफ्टवेयर, वो कोड इस एस्क्रो एजेंट के पास सिक्योर रहेगा. वो कोड इस एस्क्रो एजेंट के पास पर्टिकुलर टाइम तक, कुछ समय तक सिक्योर रहेगा. एंड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, जब जो रिक्वायरमेंट होगी, ये एस्क्रो एजेंट वो सॉफ्टवेयर कोड का एक्सेस क्लाइंट को देगा. सो अगर मेरी कंपनी बंद होगी जिसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था, आई कैन रीच आउट टू एस्क्रो एजेंट. उसको मैं बोल सकती हूँ कि प्लीज गिव मी एक्सेस टू दैट कोड सो दैट आई कैन कंटिन्यू विथ माई बिजनेस. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर मेरा मेन कोड ही मेरे पास एक्सेस नहीं है और कंपनी बंद हो गई, हु एल्स इज गोइंग टू मेंटेन माय सॉफ्टवेयर? आई विल बी नीडिंग अ थर्ड पार्टी जिसे मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे सकूं टू मेंटेन माय सॉफ्टवेयर, राइट? एंड उसे अगर मैं मेंटेनेंस का काम दे रही हूँ, मुझे उसके साथ कोड तो शेयर करना पड़ेगा. आई हैव टू शेयर दिस कोड विद देम. सो वहां पे एस्क्रो एजेंट एक्सेस देगा उस कोड का टू दैट थर्ड पार्टी कि ठीक है, नाउ यू विल बी मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर, यू हैव एक्सेस टू दिस कोड एंड यू विल बी यूजिंग इट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस ओनली. आर वी क्लियर? व्हाट्स द रोल ऑफ एस्क्रो अग्रीमेंट? एस्क्रो अग्रीमेंट का यूजेज क्या होता है? तीन पार्टीज होती है, एस्क्रो एजेंट एंड क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर. देयर आर थ्री पार्टीज इन योर एस्क्रो अग्रीमेंट. सबको समझ आया? Okay. Now let's go with the final category of your technology partnership or collaboration agreement. Now ये agreement क्या होता है? Let's go with basic example कि कई बार ना कंपनीज के पास रिसोर्सेज नहीं होते उतने जितने उन्हें प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए चाहिए होते हैं. तो अगर मेरा छोटा स्टार्टअप है, मेरे पास छोटी टीम है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर पे एक्सपर्टीज है मेरी, ठीक है. अब मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट आया है जिसमें बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, पर मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि मैं ये सर्विस दे सकूं, मैं ये सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकूं. तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी लुकिंग आउट फॉर अ पार्टनर इन दिस सिनेरियो जो मुझे हेल्प कर सके. अब मैं पार्टनर कैसे ढूंढूंगी? आई कैन कोलैबोरेट विद अ थर्ड पार्टी, जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, दे कोलैबोरेट, राइट? वो लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके रील क्रिएट करते हैं. तो सेम वे कंपनीज कोलैबोरेट करेगी दूसरी कंपनी के साथ जिसके पास इनफ रिसोर्सेज है. I'll be collaborating with a second company who has got enough resources, and whatever the profits we are getting from that project जो client लाया था, will be sharing it together. ओके. तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरी कंपनी को साथ पे लाते हैं, उससे बोलते हैं हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, हमारे पास ये क्लाइंट ऑलरेडी है. सो जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग इक्वली शेयर कर लेंगे और मिल के हम लोग ये सॉफ्टवेयर बना लेते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कोलैब विद अ सेकंड पार्टी, आई एम गोइंग टू ऑफर हिम द सेम fair share of whatever we'll be receiving from the client, and all together we'll be creating that software together. Okay, so this is your collaboration. पार्टनरशिप कैन बी और परमानेंट. अब पार्टनरशिप भी दो तरीके की होती है. एक होती है और पार्टनरशिप जहाँ पे दो लोग मिलके ऑल टुगेदर बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, सारे बिजनेस एक साथ करते हैं. एक होता है जॉइंट वेंचर. आपने ये वर्ड सुना होगा, मे बी कंफ्यूजिंग लगा होगा. जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप होती है पर लिमिटेड पीरियड के लिए, बहुत थोड़े पीरियड के लिए. इसमें हम लोग प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करते हैं. अब इसमें क्या होता है, अगर मैंने आपके साथ अप्रोच किया है टू क्रिएट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, till that time that software is created, till that time only we are partners. Once software is created, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, that's all. So that is your joint venture where two parties come together to complete a project. Once that project is completed, they both are on their different ways.
Okay, so that's the purpose of your technology partnership or collaboration agreement. IT industry में अगर कोई company के पास enough resources नहीं है, they can collaborate with a second company that has got enough resources, and both can come together and enter into a technology partnership agreement or your joint venture agreement or collaboration agreement, and together work on that particular project. सभी को समझ आया? Are we clear with it? कोई confusion, कोई doubt so far? Great. All right. So with that, we have come to an end of the session. I really hope कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा, आपको समझ आया हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट we also get motivated and we know that you are liking it. And next week सेम 6 PM में आ जाइएगा वापस, बिकॉज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्ट्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. इन नेक्स्ट वीक every Friday at 6 p.m. we are going to go live and we are going to discuss on a new topic focused on a particular industry. And ऐसे ही जैसे आज हमने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए, सेम हम लोग नेक्स्ट वीक भी 6 PM में कवर करेंगे, जिसमें हमारा फोकस होगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंड उनमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होते हैं, क्या पर्पस होता है, ये सारी चीजें. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, अगर आपको ये सेशन करके आपका इंटरेस्ट बढ़ा, आपकी रुचि बढ़ी कि आपको सीखना है ड्राफ्टिंग, तो लेड्रॉइड कई कोर्सेज प्रोवाइड करता है ड्राफ्टिंग के, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, रियल एस्टेट ड्राफ्टिंग. ये सारे हमारे ड्राफ्टिंग कोर्सेज है जहाँ पे आप ना कि सिर्फ सीखोगे बट ऑल्सो प्रैक्टिस करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे ड्राफ्ट होते हैं. आपको पर्सनल फीडबैक भी मिलेगा कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया है वो कैसा है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स कहाँ का चाहिए. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली ऑन दिस टॉपिक, then we have an upcoming course on software contract drafting starting from 15th July, and the course is currently under offer price of 1500 only. And in that you'll be learning about all these agreements जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, इन्हें ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, IT टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, और फिर आप लास्ट में अग्रीमेंट ड्राफ्ट भी करोगे और आपको फीडबैक भी मिलेगा कि आपने अग्रीमेंट कैसा ड्राफ्ट किया है. एंड सर्टिफिकेट कोर्स है तो ऑफ कोर्स कोर्स के एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, सो फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप. वहाँ पे हम इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं. आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. लिंक कोर्स का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों इसके डिस्क्रिप्शन पे है, यू कैन फाइंड इट देयर. इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, दैट इज 6204801978. आप इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली हमारे काउंसलर्स से बात करके कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हो. अगर आपको लिटिगेशन में इंटरेस्ट है तो देयर इज अ कोर्स ऑन एडवांस लीगल ड्राफ्टिंग जो 25 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप सारे सीखोगे लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एफिडेविट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी डिटेल्स आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो. So thank you so much for attending the session. Would love to know your feedback on the same. Okay, please stay connected. Hoping to see you all in the next session next week at 6 PM. Thank you so much. Okay, all right, that's all for today. Thank you everyone. Hope to see you all next week. Bye bye. Take care.